in this video we are with some second part of question number 1. So what is the sum? Let us see. We have to use suitable property to solve this. Okay, what is this question? 2 upon 5 into minus 3 upon 7 minus 1 upon 6 into 3 upon 2 plus 1 upon 14 into 2 by 5. Okay, so now you can see here 2 by 5 and here 2 by 5 is given, so we can take these two terms common. हम दोनों terms को एक साथ ले सकते हैं. Okay, so what I will write, हम अब क्या लिखेंगे? You can write here what? 2 upon 5 into minus 3 upon 7, okay, plus 1 by 14 into 2 upon 5 minus 1 upon 6 into 3 upon 2. You can write it or not. And which property you are going to write here? कौन सी property लिखोगे? By commutative property of addition. Okay, by commutative property of addition. By commutative property of addition, we know that what we know, if A, B and C are if A and B are any two rational numbers, then A plus B can be written as what? B plus A. हम A plus B को कैसे लिख सकते हैं? B plus A लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे? देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे? सी 2 upon 5 is common here. Okay, so we will take 2 upon 5 common here, and what we will write in the bracket, minus 3 by 7 plus 1 by 14 will be in the bracket. Okay, and minus 1 by 6 into 3 by 2 we will write as it is. And which property we have used? We have used distributive property. What we have used? Distributive property. And what is distributive property? That if A, B and C are any three rational numbers, then A into B plus C can be written as what? A into B plus A into C. Is that clear to you? Okay, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि we have written what? 2 upon 5 into minus 3 upon 7 plus 1 by 14, जैसे हमने पिछले सम में देखा था, right? So now what we will do? This will be equals to what? 2 by 5 into, now see, this is actually what? Minus 3 upon 7, and this is what? Plus 1 upon 14. Okay, and we know that अगर दो रैशनल नंबर आपको दिए हैं, if you know that if P upon Q and R upon S are two rational numbers, and if we multiply this, then numerator will get multiplied individually, है ना, and denominator will get multiplied separately. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इनको multiply कर देंगे. So this will be what? 1 into 3 upon 6 into 2. Is that clear to you? Now here we will take LCM. Okay, we will take what? LCM of 7 and 14. तो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर दे रहा हूँ आपके लिए. ओके, आई एम डूइंग रफ वर्क फॉर यू. सो व्हाट विल बी द LCM ऑफ 14 एंड 7? हम 14 और 7 का LCM क्या देखेंगे? इफ़ यू टेक 14 ऑफ LCM ऑफ 7 and 14, देन 7 1s are 7, 7 2s are 14, and 2 1s are 2. Okay, so your LCM will be what? 7 into 2 means what? 14. Your LCM will be what? 14. तो यहाँ पे क्या आएगा? 14. Is that clear? Okay, so what will be multiplied with this 7 to get 14? ये हम जानते हैं. हम 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 14 मिल जाए? So if 7 is multiplied with 2, 7 2s are what? 14. So ये 14 आ जाएगा, और सेम 2 जो है हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. This means minus 3 will be multiplied with 2. Is that clear? Similarly 14 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 14 आए? वी नो दैट 14 1s are 14, सो इन न्यूमरेटर 1 विल बी मल्टीप्लाइड. आई होप आपको LCM लेना आता है. प्रीवियस क्लासेस में आपको LCM लेना बताया गया है. ओके, नाउ दिस कैन बी इजीली कैंसल्ड. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So this will be equals to what? 1 upon 2 into 2. यहाँ पे क्या बचता है? 1 upon 2 into 2. Is that clear? Or this can be written as what? 2 upon 5 into minus 3 into 2. 3 2s are what? 6, and minus into plus will be minus. Plus 1 into 1 will be 1 upon 14. Is that clear? Minus this will be what? 1 upon 2 into 2 will be what? 4. So this will be 1 upon 4. Now we move on to our next step. Minus 6 plus 1 will be what? Minus 5. Okay. Minus 5 upon 14 minus 1 by 4. Now if we
ओपन द ब्रैकेट, तो हमको क्या मिलेगा 2/5 इंटू -5/14 -1/4 ये आएगा. ओके, दिस मीन्स वॉट. अब हम आगे क्या करेंगे फर्दर. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली. सो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू -5/5 इंटू 14 -1/4. ओके, देन 5 1s are 5 विल गेट कैंसल्ड. ओके, सो दिस रिमेन्स वॉट, ये 5 1s are 5 आएगा, यहाँ पे 5 1s are 5 आएगा. सो 2 इंटू -1 विल बी वॉट -2. Okay, and 1 into 14 will be what? 14. So this will be what? -2/14. Is that clear? Now if you solve this further, then you get 2 1s are 2, 2 7s are 14. Okay, this means you are getting -1/7 -1/4. I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. Is that clear? Now we will take LCM of 7 and 4. If you take LCM of 7 and 4, now see, if you take LCM of 7 and 4, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है. See, यहाँ पे क्या जाएगा 4 7 को एज इट इज लिख देंगे, 4 1s are 4 and 7 1s are 7. Okay, so LCM will be equals to what? 7 into 4 or 4 into 7, which means what? 28. So your LCM will be what? 28. Is that clear? Now what will be multiplied with 7 to get 28? 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 28 मिल जाए. We know that 7 4s are 28, तो हमको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. So this means what? This will become -1 into 4. Okay, अगेन 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, वॉट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 4 टू गेट 28, तो 4 7s are 28. ओके, वी नो दैट 4 7s are what? 28. सो वॉट वी विल मल्टीप्लाई विथ 1 7. ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे क्या बचेगा, दिस विल बी -1 into 4 विल बी -4 एंड -1 into 7 विल बी -7/28. ओके, नाउ सिंस साइंस आर सेम, साइन सेम है तो माइनस माइनस विल गेट प्लस. ओके, सो 4 + 7 विल बी वॉट 11 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर 7 है और उसके आगे माइनस का साइन है, सो -11/28 एंड दिस विल बी योर final answer. Okay, so I have completed this second part in this video. Okay, I hope आपको clear हो गया होगा. I hope you understood it clearly. Okay, और and if you are having any problem then please let me know. Okay, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो पाएँ. Okay, so in next video we will move on to our next question. Thank you.